Assalamu alaikum dear students. We are here for the discussion of test number 14, ninth chemistry. First of all, we will discuss the MCQs. The first MCQs is 1 AMU atomic mass unit is equivalent to 1.66 10 raised to power minus 24 milligram, 1.66 10 raised to power minus 24 gram, 1.66 10 raised to power minus 24 kilogram, 1.66 10 raised to power minus 23 grams. You have to remember that one atomic mass unit is equal to 1.66 multiplied by 10 raised to power minus 24 gram. So option B will be correct. Here you can see that mass of proton, mass of neutron, mass of electron in atomic mass unit and then they are converted into grams. So one atomic mass unit is equal to 1.66 10 raised to power minus 24 gram, and one atomic mass unit is 1 over 12th the mass of an atom of carbon 12. This is option B, that is correct option. Second one is, which one of the following molecule is not triatomic? Here you can see it is the negation, negative answer, that is not a triatomic molecule. Option A, H2, that is diatomic molecule. It should be correct, but we will discuss all the options. Option B, O3, that is triatomic molecule. H2O, triatomic molecule. Carbon dioxide, CO2, triatomic molecule. So all other options except A have three atoms, so they are triatomic molecule. But option A, H2, that is not a triatomic molecule, it is diatomic molecule. Option A will be correct. Mass of one molecule of water is 18 AMU, 18 gram, 18 milligram, 18 kilogram. One molecule of water mean the molecular mass of one molecule of water, that is 18 AMU atomic mass unit. But if we are talking about the 1 mole of water, the molar mass of 1 mole of water, that will be 18 gram. So the mass of one molecule of water will be 18 AMU, 18 atomic mass unit. You have to remember there is a difference between the molecule mass of one molecule and mass of one mole. One mole mean the mass will be converted into grams. The mass will be shown in gram. So it will be mole, and if we express the mass in atomic mass unit AMU, then it will be the mass of one molecule. So option A will be correct. Which one of the following is the molecular mass of oxygen in AMU? Simply O2, the mass of one oxygen atom is 16 gram. So O2 mean 2 multiplied by 16, that is equal to 32 AMU. All other options are just the distractor. They have no relation with the mass in atomic mass unit. So there is example that the mass of carbon dioxide, the mass of water, the mass of nitrogen, you can write anything like that. This is just a distractor that you should know that how to calculate the mass of other molecule. This is the given example like that carbon dioxide. If we are talking about the carbon dioxide, you will add the mass of carbon and oxygen. 12 plus O2 mean 16 multiplied by 2, that is equal to 12 plus 32, that is equal to 44. Similarly, you can calculate the molecular mass of water, that is 18 AMU, like that we have discussed in previous MCQs. You can calculate the mass of nitrogen like that, N2, that is equal to 28. So in this way you can calculate the mass of any molecule in atomic mass unit. So oxygen mean O2 means 16 multiplied by 2, so option A will be correct, 32 AMU. How many number of moles are equivalent to 8 gram of carbon dioxide? When you are finding the moles, you have to remember the formula that number of moles is equal to mass in gram divided by molar mass.
Putting the value of mass in gram and molar mass, you can find out the number of moles. Mass in gram is given, that is equal to 8 grams of carbon dioxide. Molar mass of carbon dioxide you can find like that we have discussed in MCQs number 4. 16 multiplied by 30 multiplied by 2 plus 12, that is equal to 44 gram per mole, that is the molar mass. So divide the mass in gram by molar mass, that is equal to 0.18 mole. So the option B will be correct. Which one of the following pairs has the same mass? 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of nitrogen. You can calculate it. Carbon monoxide, carbon plus oxygen, that is equal to 28 gram. Nitrogen, mass of nitrogen, you know the atomic mass of nitrogen is 14 multiplied by 2 because nitrogen exists in the form of N2 molecule, diatomic molecule, that is equal to 28. Both will have the same mass. So option A should be correct, but we will discuss other options as well. 1 mole of carbon dioxide and carbon dioxide and carbon monoxide. You know that mass of carbon monoxide is 28, but carbon dioxide is 44, that is not equal. O2 and N2, that is equal to 32 and 28, that is not equal. O2 and CO2, definitely 32 and 44. So option A should be correct because carbon monoxide and nitrogen have the same mass, that is equal to 28 gram. Almost all metals are solids except sodium, magnesium, iron, mercury. All the metals are solids except mercury. This is the exceptional case that a metal is in the liquid form. So that is mercury, that is in the liquid form. All other metals are solids because they are a strong metallic bond, and the molecules are packed together with a very strong forces of attraction. Electron pool theory, electron gas theory, the force of attraction between metal positive ion and the free electrons. So metallic bond is a very strong bond. So all the metals are solid, but mercury exists in the form of liquid. Option D will be correct. Second ionization energy of magnesium is 738 kilojoule per mole, 1450 kilojoule per mole, 1064 kilojoule per mole, 965 kilojoule per mole. The value of first and second ionization energy is given in this table. You can see at second in the second line, second row, you can see it, the magnesium uh, has the first ionization energy that is equal to 738, and the second ionization energy, that is equal to 1450 kilojoule per mole. This is a very large amount of ionization energy. The reason is that the first ionization energy always less than the second ionization energy, because the forces of attraction after removal the electron will become more stronger between the nucleus and the remaining electron. Size of the cation will be reduced, so the forces of attraction will be strong. You have to provide a large amount of energy to remove the another electron. So second ionization energy will be higher than the first, that is equal to 1450 kilojoule per mole. Option B will be correct. Chlorine accept electrons in its outermost shell. We know that chlorine has 17 electron in its valence shell, so it requires only one electron to complete its electronic configuration, like that the nearest noble gas, that is argon, which have 18 electron. So chlorine will accept only one electron, and it will have 18 electron and 8 electron in its valence shell. So its electronic configuration resembles like that argon. So by accepting only one electron, it will become stable, and its electronic configuration will resemble like that argon. Option A will be correct. Which one of the following metals is very reactive? Lead, iron, gold, calcium. Calcium belongs to alkaline earth metal family. Lead and gold are least reactive, less reactive metals. Iron is moderately reactive, but calcium, you know that
This ability, the reactivity of metal, depends upon the ease of removal of electron, because alkali metals and alkaline earth metals have 1 and 2 electron in its valence shell respectively, so they can lose their electron easily and they are highly reactive. So option D will be correct. Which of the following halogens is strongest oxidizing element? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine is the strongest oxidizing agent in its family, because it can oxidize all other halogens. Its electronegativity is maximum, that is equal to 4.0. So it can gain electron from all other element and that is the reason that fluorine is strong oxidizing element or strong oxidizing agent, you can see it. While the iodine, that is the last member of this family, that is mild oxidizing agent, or weak oxidizing agent, you can say it. So option A will be correct. Chlorine reacts with water in the presence of sunlight and produce HCl, HOCl, both A and B, and HClO3. Definitely, you can see in the table the reaction of chlorine and water. The product is HCl, hydrochloric acid, and HOCl. So option C, that is equal to both A and B. I mean to say, when chlorine reacts with water in the presence of sunlight, the product will be hydrochloric acid, HCl, and HOCl. You can see it in the given equation. Why copper is used for making electrical wires? Copper is very good conductor of electricity and much cheaper than gold. एक तो ये सस्ता होता है और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, चूँकि जाहिर सी बात है हमें कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, हमें फाइनेंशियली भी देखना पड़ता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बजाय हम कॉपर को यूज़ करते हैं, वरना सबसे अच्छे कंडक्टर गोल्ड और सिल्वर हैं, लेकिन चूंकि वो महंगे हैं इसलिए हम कॉपर को इस्तेमाल करते हैं। हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। साइज़ ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप के अंदर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है। किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर में जो डिफरेंस है, डेफिनेटली आपने बार बार इसको पढ़ा है। होमोजेनस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है, जबकि हेटेरोजेनस जो है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है। इनकी एग्जांपल्स गैसोलीन और आइसक्रीम है जो होमोजेनस में है, सॉइल है, रॉक है, वुड है, ये सारी की सारी हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर आती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक को मिक्सचर आपने प्रूव करना है, जबकि वाटर को आपने कंपाउंड, इसको एक्सप्लेन करना है। डेफिनेटली आपने जो डिफरेंस पढ़ा है मिक्सचर और कंपाउंड का, वही आपने बताना है यहाँ पर। सॉफ्ट ड्रिंक का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता और इसके अंदर कोई फिक्स्ड कंपोजिशन बाई मैस नहीं होती, और ये सिंपल जो है मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस को सिंपली फिज़िकल मीन से इसको प्रिपेयर किया जाता है, जबकि वाटर का केमिकल फार्मूला होता है। इसके अंदर फिक्स्ड रेशियो बाय मैस होती है, जो कि वाटर के अंदर है 16 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 18। इसके अंदर जो है बाकी इसको केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए जो है एटम के केमिकल कम्बिनेशन के मिलाप से ये बनता है, तो इसलिए वाटर कंपाउंड है जबकि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिक्सचर है। Which one has more atom, 10 gram of aluminium or 10 gram of iron? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालें। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल्स उसके ज़्यादा होंगे जिसका मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस की जो रेशो है वो ज़्यादा होगी, तो उसके मोल्स भी ज़्यादा होंगे। 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 27। 10 ग्राम ऑफ आयरन का मतलब है 10 ग्राम मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई इसका जो मैस है वो 55.85 है।
एलुमिनियम का 0.37 मोल बनते हैं, जबकि आयरन के 0.17 मोल बनते हैं। यहीं से हमें पता चल गया कि एलुमिनियम के नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने चाहिए। 2.33 10⁻23 एटम्स हैं एलुमिनियम के, और 1.078 10⁻23 एटम्स हैं आयरन के। तो डेफिनेटली एलुमिनियम हैव मोर नंबर ऑफ एटम देन आयरन। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्स को आपने डिफाइन करना है, एग्जांपल्स देनी है। ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आई गई। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स से बना है, जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी सेम होता है, और इनको सिंपल मीनिंग से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मज़ीद सिंप्लीफाई इसको नहीं किया जा सकता। इसको लिक्विड सॉलिड गैसेस में डिवाइड किया जा सकता है, मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलाइड्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। ये सारी डिटेल आपने बतानी है इसमें। sulfuric acid is the king of chemicals. If you need 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams ऑफ इट विल यू वेट? आपने यहाँ पर मैस इन ग्राम फाइंड आउट करना है। मोल्स आपको गिवन है 5। मोलर मैस आप कैलकुलेट कर सकते हैं H2SO4 का, दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। सिंपली फार्मूला लगाएं, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मैस इन ग्राम आपने फाइंड आउट करना है, 98 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 490 ग्राम। राइट 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की प्रॉपर्टीज आपने बार बार पढ़ी हैं इसमें। दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आयन form positive ion. They readily react with oxygen to form basic oxide, usually form ionic compound. They have metallic bond in वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के अंदर जो है वो लिखनी है। दैट इज़ द एंड ऑफ योर डिस्कशन ऑफ टेस्ट नंबर 14. If you have any query about that, if you have any question about that, you can contact me at my WhatsApp number 030129488080. Remember me in your prayer. Take care and Allah Hafiz.